So we are teachers, and we are doing the different activities in our schools, and we will try to remove all the obstacles in the teaching and process. And that is our duty to clear the way also. So, and Lord does the rest. On behalf of entire Bharati Public School family, I, Bharati Bal, HTMC, feel honored and we extend a warm and heartfelt welcome to our greatest and eminent personality and accomplished educator, the highly respected CBSE resource person, Mrs. Mitali Mukherjee ma'am. We also welcome our dedicated teachers here for attending this session. So, we are deeply grateful to Aryavarta Sahodaya School Complex for providing us with this valuable opportunity to enhance our knowledge on the topic and apply our school activities. Now, it gives me great pleasure to invite our principal ma'am to kindly Mrs. Mitali Mukherjee, principal of the Aryavarta School, Patna, and obviously invite the listeners. Ma'am, please. Principal ma'am, your unwavering support and guidance have been a constant source of inspiration to all. Your commitment to ensure a holistic educational experience for our students continues to set an example standard. Also, thank you, ma'am. Now I request Principal ma'am, please come to your lamp so we can start our training program. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Mrs. Mitali Mukherjee, we are truly excited to learn from your vast experience and insights from the instructional event strategies. Already the time is already gone. So I request Mitali ma'am, please start our session without wasting any time. Ma'am, it's all. Okay. I would like to wish a very warm welcome and a very good morning to Mitali ma'am, and also render my gratitude because in her youth she has graciously agreed to come here. Yesterday madam was in Devghar taking a session. She travelled all the way after the session back, and today she started early morning. I don't know whether she has slept in the night or no. And she is here full of energy and vigor. So this is really something you will always remember. Very few people
have this high energy level and positivity. And I'm also thankful especially to Himanshu sir for coordinating and arranging the session, and because of his efforts we are having ma'am with us. All of us are always attending CBSE training sessions online. So ma'am's name is not Mitali is an accomplished educator, a self-motivated and result-oriented educationist. At present, she is heading a very renowned school in Patna, Millennium Public School. Madam is having more than 23 years of experience in school management, handling various diversified functions of the school. So it is proven beyond doubt that Madam is a leader in her own capacity and a role model for all of us. Madam is a resource person for CBSE Center of Excellence Patna. She is also the Deputy Training Coordinator for Patna Zone. She is a Regional Training Coordinator for Patna Zone, COE Patna. And as I said, she is heading the Millennium Public School, Millennium World School, Patna. So ma'am, we are very, very much fortunate to have you among us. And the stage is all yours. We all are waiting for your guidance and your guidance. Please ma'am. Thank you. Very good morning to all of you. Charged? Batteries charged now? Okay. We'll consume a lot of battery today. Okay. So, all of you are from the school? No? Some of you are not from the school also? So, we have a variety of teachers around. Okay, teachers. See, I'm a very clever person. I have chosen this topic very cleverly. You see what the topic says? Instructional design. Now, as teachers, you must be knowing that the only thing that we do in the classroom is give instructions. Okay. So it's a very vast topic. Don't worry. Anything can be discussed under the umbrella of this topic. So first of all, let me request you that if you have anything by choice, you can always ask for that. If I have it in my jacket, I will open it up for you. In case I don't have, then maybe next time. So if it's your choice, if you want something specific, ma'am is also here. If you want something specific, kindly go ahead and design accordingly. Otherwise, I have certain things in my mind. We'll go ahead with that plan. As you wish, I can give you 1 minute's time to discuss this. And as we discuss, let me begin by thanking God, making it possible to be here. Actually, when I was halfway and I saw the fields on both the sides, I thought, Bharati, very difficult to reach this point. And I am very thankful to ma'am and hats off to her and all of you present here. You work in this kind of location, but you have actually made this school so beautiful, so lively, so welcoming. And ma'am has come from Mumbai. See, I belong to Patna. Still, I feel this place is in a very remote area. First thing that I met, I asked ma'am, what made you come here from Mumbai? So, hats off to her dedication and to her commitment towards education actually. We are doing a job, but she is fulfilling a commitment towards education and towards society, and all of you here, I think you deserve a loud round of applause. So let's clap for us. Very good, very good. Mitali, you
with whatever I have. Okay. So I thought that when we are doing this instructional design, I need to open the other one. Okay. So you have a slide. Can you give it to me so that I'm comfortable? Okay. So I thought of discussing 3 topics with you, which are related to classroom teaching. Number 1 is happy teachers create happy classrooms. Now suppose today is Monday, and Monday you have 7 periods out of 8. And all those periods are, 9A, 6A, 4A, 5A, all different subjects, different levels, pedagogical levels. And after that dashing weekend, when you come on Monday and you take so many classes, you really feel depressed and sad. Monday क्यों आ गया? So, do you believe this, that somewhere down the lane, your teaching will suffer? Because the most important aspect of life is your attitude. If I keep thinking, hey Mitali Mukherjee, yesterday you were to Deoghar, again today, which place is this? Nabinagar. Why are you torturing yourself so much? क्या जरूरत थी? इतने दूर आने की, फिर वहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर घर जाओ, फिर घर से स्कूल जाओ. I don't think like this. And on the other side, I think, wow, what a weekend! 2 places, 2 schools, at least 300 different people. Such a lot of traveling, greenery, sunshine. Oh my God, what a weekend. The same situation can be thought in 2 ways, and not only 2 ways, but multiple ways. So, the attitude of a person actually creates the difference. Your attitude towards your children, your attitude towards your life will make the difference. But I feel the most important attitude is the attitude that you have towards yourself. अगर हम ठीक नहीं हैं, if I am sick, if I have minor headache also, the entire performance will take a back seat. You agree with it? So the very first thing that today we are going to discuss is how to be motivated. Maybe like now. I mean, by far I used to think that I am a self-motivated person. But after meeting a principal, truly speaking, I feel I am nowhere. There are people like her also who can be motivated to this extent. And it's actually very, very correct. So teachers, the first thing that we're going to study today, try to learn today is how to be happy. Okay? So, close your eyes. All of you close your eyes. Just for 30 seconds, not more than that. Zyada sochna nahi. Okay, I'll just bring the mic and you will say, what does happiness mean to you? One word. One word or 2 words. No sentences. Okay, ma'am, what is happiness for you? Sleeping. Oh, wonderful. What is happiness for you? Sleeping. Sleeping. Chalo. What is happiness for you, sir? Reading. What's happiness for you? Play. Okay. Playing what? Badminton. Oh, wonderful. What's happiness for you, sir? What is happiness for you, ma'am? Drawing. Beautiful. What is happiness for you, sir? Singing. What's happiness for you? Cooking. Okay, good, good. And what is happiness for you, sir? Relaxing. Kaise relax? Okay, just
करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन होता है, which is actually making you happy. It's a mood boost. I'm very happy. I'm very happy today. That at least आपको कोई पता है what makes you happy. Trust your teachers. I've taken this workshop with many teachers. Many of them will say teaching students. When my student gets good marks, then somebody will say, when I work very, very hard. When you work hard, you don't like it. You feel tired. Am I right? So many people in this world actually don't know what makes them happy. It's a fact. और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं ना कि हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें होना लाइफ में जरूरी है। वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स। हैप्पीनेस के लिए जितनी छोटी चीजें जरूरत है उस लेवल पर जाकर हम सोच ही नहीं पाते। इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैप्पी होते हैं। जैसे ही हमें घर खरीदते हैं हम ये सोचते हैं अभी इसका इंटीरियर्स कैसे कराना है, और 20 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, फिर हम हैप्पी होते हैं। घर खरीदने का हैप्पीनेस कहाँ है? जब हमारे बच्चे को 100 में 80 नंबर आते हैं तो ये सोचते हैं 98 नहीं है, बस हैप्पीनेस खत्म, 80 का हैप्पीनेस 0। हम एक नया ड्रेस खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं इसकी मैचिंग इयररिंग्स, इसकी मैचिंग चूड़ी, इसका मैचिंग जूता, ये भी होना चाहिए, तब ना करेंगे। हैप्पीनेस remember teachers, teach your children also. Teach yourself also to be happy for small things in life. I still remember when I was a child, we did not have this dairy milk, Cadbury, ये सब नहीं होता था। मेरे father, मुझे अभी भी याद है, 30 पैसे में मिलता था। You are not comfortable in Hindi and English more? It's okay? So you know my father used to bring a 30 paisa orange. So lemon juice है, toffee भी lemon juice, वो कट से टूटता था और हम लोग वो आवाज सुनाते थे एक दूसरे को, कान में जाते थे, वो कट के भी आराम से खाने का चॉकलेट। And that was happiness to us. And when I give a small chocolate to my son, he would not say thank you also. But when I give him a big Cadbury, dairy milk, he says thank you, Mama. Thank you, Mama. So see how the definition and the range of happiness has changed. You understand? We have become very complex. You know, this is the VUCA world. You understand what's meaning of VUCA world? V is for volatile, U is for uncertain, C is for complex, and A is for ambiguous. We don't know. We all are living in a VUCA world जहाँ कल क्या होगा हमें नहीं पता। हमारी जिंदगियाँ इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, इतनी ambiguous, इतनी volatile हो गई हैं। अभी हम खुश हैं, अरे इतने सारे टॉफीज हैं, अभी टॉफी खत्म हो जाएगा तुरंत गुस्सा। क्या arrangement है बार-बार गुस्सा? टॉफी खत्म हो गया, टॉफी में नहीं देते। We are very volatile.
discuss active learning. Active learning में जैसा भी आपने पहले किया, तभी तो 5-10 मिनट में थोड़ा मजा आ रहा है, फिर दोबारा आपको सुनना शुरू करेंगे। मैम बोल रही है कुछ, हम थोड़ा सो रहे हैं, वैसे ही प्लीज समझिए। So we will discuss how to make learning active in the classrooms. And if we get time, I will try to tell some pedagogies. What's the meaning of pedagogy? Pedagogy means teaching methods. How you teach in the class. Like I'm a what am I doing? I'm giving you a, what is my pedagogy? What is my pedagogy? Any idea? Lecture. Very good. I'm giving a lecture. Lecture method. So there are many such pedagogies. Okay? Of course, lecture is the worst of them. So this is what we plan to discuss today. Are you okay with it? Are you okay with the agenda? Okay. So first of all, happy teachers create happy classrooms. Now, happy teachers create happy classrooms. Somebody promised now. We will change this. Okay. Change it, please. नहीं हो रहा? अच्छा, कोई बात नहीं. Okay. Maybe we can do it with this. The very first thing, it is very important to create a positive classroom environment. जैसे मान लो ये बच्ची है, बहुत शौक से आज ट्रेनिंग में गई है, आज मैं जाऊंगी, कुछ नई चीजें सीखूंगी, पटना से एक मैडम आई है, जरा देखेंगे, समझेंगे. Maybe she is having a very positive attitude. Now I go to the class and say, what is this? Your hair? You see your hair? ऐसे बाल कैसे कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या धागा जैसा कर रहा है? इसके बाद मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, मैं कितना भी अच्छी अच्छी बातें करूं, खूब पढ़ाऊं, खूब नॉलेज दूं, she will not be a part of my class. Why? What is the reason? क्यों? क्योंकि गुस्सा, yes ना? Upset when is बातें ही negative. Positivity तो मैंने negativity में बदल दिया. लेकिन अगर इसी बात पे ऐसे कहते हैं बेटा, अगर आप ऐसे करके ऐसे करवा दोगे ना, देखना और सुंदर होगा. Same चीज मैंने बोली, but I told you ना positive. So remember, positivity is the key to happiness. आपके स्कूल में आपको बाहर मैंने देखा बहुत सारी चीजें लगा के रखी हैं. एक सरस्वती जी की मूर्ति है, फिर आपने कुछ कुछ कोटेशंस लिख के रखा है, फिर आपकी सीढ़ी पे भी कुछ लिखा हुआ है. नहीं लिखते तो क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा मेहनत बचता टीचर्स का, पैसे बचते हैं, और क्या होगा? आपका जो एम्बियंस है, जो एंट्री है, वो इतना पॉजिटिव नहीं होता. It is very welcoming. It is very positive. It's colorful. It's vibrant. It's energetic. आते हैं कोई नहीं. ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा. कहाँ भी? So you feel good. That's a feel good fact. So the moment हम में से हर इंसान एक ऑरा लेकर चलता है. भगवान की मूर्तियाँ देखी कभी आपने? वो हमारे हिंदू धर्म वाले जो भगवान होते हैं, जब पूजा होती है ना, वो दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, तब देखते हैं ना हर भगवान के साइड में कैसे बना होता है गोल, और वो छक 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 करता है, वो हिलता है, गोल गोल घूमता है. What is it? It's an aura. हम ये बताना चाहते हैं कि every god and goddess they have an aura. Aura. अगर वो aura काला रंग का हो तो कभी देखा है आपने aura काला black कलर का? Black magic. फिर वो भगवान नहीं होंगे, वो कौन हो जाएंगे? शैतान. समझ गए आप? So remember this. भगवान का ऑरा दिखता है, हम लोग दिखाते हैं, लेकिन इंसान के में ऑरा होता है. कभी-कभी आप देखोगे, अगर एक दिन प्रिंसिपल मैम स्कूल में नहीं है, ऑरा होता है कि मिसिंग होता है ऑरा. You miss or you don't miss. कुछ एक तो फीलिंग होती है. अच्छा कुछ लोग सोचते हैं बहुत बुरा, कुछ पूछना था,
खान है, और कौन है, सलमान खान है, रणवीर सिंह है, वेरी गुड। थोड़ा मैं अपने टाइम का हीरो को याद करूंगी, जैसे सनी देओल, दिलीप कुमार, ये लोग हैं ना। लेकिन आप सबसे अच्छा तो मुझे मेरा हस्बैंड ही लगता है। व्हाट इज द रीजन? इतने हैंडसम लोग हैं पूरी दुनिया में, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, इतने लोगों से मिलती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड ही मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता है? व्हाट इज द रीजन? Aura. Yes. You don't like the person. Actually, you like the aura. You can feel that connectivity. जो connectivity से पूरी सर्विस आती है, वो सिर्फ 5 घंटे बाद connectivity का रेशियो 5 घंटे बाद मुझे और अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने 5 घंटे इनके साथ बिताए हैं, तो aura हमारा थोड़ा मैच है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। Understand? हमेशा ऐसा कि मैं एक देवी, मैं एक भगवान हूँ, हर चीज के घर में हम बिलीव करते हैं, और मेरे चारों तरफ के ऑरा। अभी आपका काम है, आप अपने ऑरा को रेड रखेंगे, पिंक रखेंगे, ऑरेंज रखेंगे, या ब्लैक करेंगे, आपके हाथ में। You decide what you want to do with that aura, because that aura actually defines you. और उसी ऑरा को हम कहते हैं positivity. That's positivity around you. ठीक है? मैं कहीं डिस्कस हो रहा था, एक शिव जी का मंदिर है somewhere in south, नागार्जुन फॉर्म में उनका कोई अवतार है मंदिर है। तो वहाँ वो कह रहे थे कि that is supposed to be the उग्र रूप of Lord Shiva या Lord विष्णु, something like that. मतलब भगवान का गुस्सा वाला अवतार है। क्यों भी बोल रहे हैं? तो you know what they do? पूरे साल वो रोज छोटी सी मूर्ति है वहाँ, जो स्वयंभू है, वो प्रकट हुई थी। मतलब this is the story. तो जो भक्त पंडित लोग हैं वहाँ, वो पूरे साल उस मूर्ति में एक एक लेयर करके चंदन का लेप लगाते रहते हैं। चंदन लगाया, चंदन लगाते लगाते बड़ी सी शिवलिंग का आकार बनता है उसको। तो जब आप वहाँ दर्शन करने जाओगे तो आपको शिवलिंग दिखेगा, लेकिन वो है शिवलिंग नहीं, दैट इज अ प्रतिमा ऑफ नागार्जुन अवतार। लेकिन उनको इतना गुस्सा है कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए रोज वहाँ चंदन का लेप लगाया जाता है, और फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे धीरे धीरे हटाया जाता है। And the entire 365 days, there is one day where there is no chandan lep. Then only that day you will see the Aryavarta. So remember, negative aura, aggression, gussa, even of the gods, nobody is. हमारा इंसान भगवान है, इसलिए लोग उन पे चंदन का लेप लगाते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें अपना चंदन का लेप नहीं लगाना। Nobody will help us with the चंदन का लेप। आपको ही अपने आप को चंदन का लेप लगाना है, आपका एग्रेशन, आपकी नेगेटिविटी, आपका गुस्सा धीरे धीरे कम। That is very very important। एक इंसान कितना भी अच्छा होगा, एक इंसान कितना भी talented होगा, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना, if that इंसान is a खड़ूस इंसान, we don't like him. We don't like him. सब कहते हैं इस नाना पाटेकर है हमारे, कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन नाना पाटेकर को हीरो बन सकते हैं क्या? क्यों? मेरा बहुत टाइप्स always angry mood. So don't be that. So happiness unlocks the doors, and aggression and negativity locks doors. So open the doors of your life. Let the windows and doors be open. Let a lot of sunshine and good wind and good vibes come inside. Okay? So positivity is very very important. अभी positivity 3 चीजों से हो सकती है आपके पास। 3 things. Number 1, physical environment can be positive. Number 2, emotional environment can be positive. And number 3, self-esteem has to be developed. Now, let's go to the physical environment. Physical environment
audio video classes and the physical and emotional environment. कैसे physical environment को attractive कर सकते हैं? How? Game. नहीं, ये मेरा physical environment मतलब ये infrastructure है। आप मान लीजिए, this is the classroom, मान लीजिए इसको, ये दीवार है, स्टेज है, ये है, इसको और positive कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? Very good, very good. Seating arrangement. अभी ऐसे लगा दिया है, तो ये चार सीटियाँ जो हैं, आपस में बीच-बीच में बात भी कर सकती हैं, टॉफी खा सकती हैं, बिस्किट खा सकती हैं, थोड़ा टिफिन निकाल के भी शेयर कर सकती हैं, थोड़ा आँखों में इशारा कर सकती हैं, थोड़ी ड्राइंग पास कर सकती हैं, तो ये फिजिकली it will feel good. और अगर इनको ट्रेडिशनली बैठा दिया जाता है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं, तो बाप रे अकेले बैठे सेशन कर रहे हैं, जैसे बच्चे एग्जाम में हो जाते हैं, सर सीटिंग अरेंजमेंट दूसरे रूम में जाना है, बेंच में, they are insecure. So your physical environment should be very very positive. Now come on, और कैसे कर सकते हैं? ये दीवारें जो white है, अगर इसका very good, red, blue, yellow, green कर दे, यहाँ पे कुछ हम strings लगा दे, सुंदर सुंदर, और मैडम का काम, उस मैडम का काम, इन मैडम का काम, सबका काम यहाँ लिखे. This is ma'am, this is my artwork that I have made. This I have drawn. ये मैंने लिखा है.
ऊपर करो, या ऊपर करो, ठीक है, हमारे लेवल से ऊपर है। तो मैंने आप मुझे की तो क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ सर, आपको खाना बनाने क्या है? पीजीटी के एक बायोलॉजी के थे, एक फिजिक्स के थे, एक बायो केमिस्ट्री। मैडम, हम लोग एक क्लास में
as ma'am brought about very nicely, student placement. Where are they sitting? That's also very important. Where are they sitting? You see, have you ever noticed in your school, when you change the seat of some children, they start crying also. Some of them become rebellious. They say, no ma'am, इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मुझे वहीं बैठना है. And the parents also come, they complain. Section अगर आप change करेंगे, then the parents will come to complain. Why did you change the section of my child? My child is not comfortable in this section. Please put him in that section, etc. So remember this. Putting the child in the right place is very important for positive classroom environment. Of course, by this I don't mean कि आप उस बच्चे को हमेशा अपने फ्रेंड के पास ही बैठा दीजिए ताकि वो all the time talking to him. But अगर आप उसको फ्रेंड से पास से हटा कर दूसरी जगह बैठा रहे हैं, the child should be explained what it means. And the child should be able to understand. My teacher is doing this for my good. And then you should reward the child. अगर एक हफ्ता आप अच्छा behavior show करोगे, आपको वापस मानते हैं. So that will instill positivity. लेकिन अगर आप break down, come on, what's it? All the time you know the talking. Maybe the child will be depressed. The child will feel bad about it. और उसको ये feel होगा कि punishment आ रही है. मेरी punishment हो सकती है. So remember, punishments don't work. In education industry, punishments don't work. What works is rewards. When you punish somebody, that person becomes demotivated. दुखी हो जाता है. But when you reward for good work, and you don't reward for bad work, you just reward for the good work, and that instills motivation. You become happy. क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? Happiness. हमें खुश करना है अपने आप को भी और हमारे बच्चों को. Next, please. Next is very successful method. You have a lot of land, as I can see. If you have big classrooms in your school, please use this. It's a fabulous method. What I just told you right now that I have done for class 10. You know, every room has 4 corners. Every room has. But maybe in a classroom, 2 corners are already used up. Your space nahi hai. You can make 1 corner also. You make 2. Ideally 4 corners. Corners are those areas where we put child-centric activity works. For example, if you know a little bit of pedagogy or education psychology, आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे सबसे ज़्यादा हेट करते हैं. बच्चों से आप जनरल अगर एक सर्वे करें अपने स्कूल में भी, you can do a survey and you can find out what do you hate the most. Very good. दबे बोलिए जोर से बोलिए. Absolutely. They hate studying and they love everything else. Everything else. Some of them love studying because they love to become the toppers of the class. That's another system. आप किसी भी बच्चे से पूछिए पढ़ना है? ना, तो अलग बात. Sir, जल्दी से next period में. Very cool. They don't want to study. लेकिन हमारा काम ही पढ़ाना. Worst part is we have to make them do something that they hate to do. Actually, I don't know. They actually understand hating or not. वो उनकी जुबान की बात है. So, can I bring an element of games in my classroom? In my physics class, content class, ऊपर वाले लोग जो पढ़ाते हैं, content वाले physics के class में, mathematics class में, English के class में, can I give one input of a game? How? Corner system. जैसे, for example, I'm giving you a few ideas. You can make a corner of dices, puzzles, board. You can make a corner in which you have some storybooks. You can make a corner in which you have Gudiya Gudi. In our class, we actually have in class 3. Gudiya है, गुड्डा है, उसके कपड़े हैं, उसके खिलौने हैं, और बच्चे खेलते हैं. लड़कियां special. Can you have a corner in which you have some wonderful storybooks? Can you have a corner in which you
is very important. What happens in your school normally? बच्चे आते हैं सुबह फिर क्या होता है? असेंबली होती है, फिर आप असेंबली के बाद जाते हैं क्लास में, उसके बाद you have attendance. What is your system? First assembly, then you go to class. Okay, very good. So एक इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया टीचर, इंग्लिश टीचर goes and हिंदी टीचर comes, or maths teacher comes, okay, to the class. So what happens? Children get up and say, "Good morning, sir." मुझे याद है, अभी भी मुझे याद है। हाँ, और हिंदी की मैम थी, उन्होंने हमारी ऐसी पिटाई की, सिर्फ इसलिए कि हम खड़े नहीं हुए थे। मन नहीं कर रहा था उसने खड़े नहीं हुए, और मैम को मिश्ती के मैम खूब पिटाई की। मतलब बहुत हाथ पैर जोड़ा, then she did not take it to the principal, otherwise she would have taken it to the principal also. उसके बाद मेरा कभी मन ही नहीं करता था मिश्ती में। I always thought that I'm wishing her because I have to wish, but that feeling never came, and I need to wish. Remember this, teachers. Because you are a teacher, nobody will respect you. And because you are a teacher, people will respect you. Depends which kind of teacher. Do you command respect, or do you earn it and give it? Earning can only be done when you give something. आपको सैलरी मिलती है, आप सबको सैलरी मिलती है, बिना कुछ किए मिलती है। आप कुछ करते हो ना, 30 days you are doing something, then you earn yourself, you get yourself. So because here you have an ID card, I am a teacher, why do I need to give you respect? Why? ये तो वही बात हो ना, तो हंटर वाला, हम पुलिस वाले हैं, रिश्वत दीजिए मुझे, 10 रुपए नहीं दोगे ट्रक नहीं पाओगे। ऐसे तो नहीं। Always be the first person to wish. मैं स्कूल में जाती हूँ, I never wait for my guard, for my driver, for my conductors, for my DTs to wish me. Hello भैया, कैसे हो? सब ठीक है घर में? चलो, hello ma'am, how are you? You look so beautiful today. अच्छा, that color really suits you. Okay, thank you. Hello, good morning. Then they also wish, good morning ma'am, how are you? Good morning, good morning. फिर उनका मन नहीं भी करेगा, तो भी वो विश करेगा। अगर उन्हें सही हो तो स्मार्ट करें कि मैम गुड मॉर्निंग, आप बोलेंगे, आपका मन नहीं भी होगा, then also you say. But if I wait, ये स्कूल का टीचर है, हम प्रिंसिपल हैं, वो नहीं विश किया, इसका बदला सीएम मुझे दो। Don't do this. Don't do this. You will never become a respectable person in the society, in your school, in your class. Never. You always tell the monitors, no, don't shout. Be very polite. Don't shout at your friends. Be polite with your friends. You tell this. Same thing you have to do. जितनी ऊंची आपकी पोस्ट है टीचर्स, बच्चे आपको देंगे। जितनी ऊंची आपकी पोस्ट है, उतना आपको humble रहना होगा। जितनी ऊंची आपकी पोस्ट है। So always remember, अगर आपके क्लास का कोई बच्चा आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका कोई ग्रुप नहीं का स्टाफ आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। Never. उनकी समझ है, उनकी समझ नहीं करते। लेकिन आपको बड़ी पोस्ट में आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। Oh, there's something wrong with him. See how good he is. You smile and you accept it. अगर आपका vessel, the vessel which God has given you, should be big, bigger, biggest, so that you can put everything inside. Put everything inside. आपका बर्तन ही इतना छोटा सा है, कुछ डालता है तो उछल के बाहर आ जाता है। तुमने मुझे बोला, मैं टीवी में सुनाऊंगी, मैं कम हूँ क्या? सुनाओ। आपका वैसा छोटा सा है, आपने जो डाला उछल के बाहर। तो फिर भगवान नहीं देंगे, भगवान कहेंगे इसका बर्तन बहुत छोटा है, इसमें ज्यादा मत डालो, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन if you have a big vessel with you, very big vessel with you, and जो डालो, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। आपको पता है ना, अगर हम झूठा खाना भी जमा करते हैं, अगर हम मरे हुए पत्तों को भी जमा करते हैं, they also turn to be, what do they turn to become? They become fertilizers.
I was doing? What was the wrong thing that I was doing? Shouting at the mother in front of the child. Or maybe, just now checking an example, I was telling the child negative words. Had I put his negativity in a positive way, maybe the child would not have felt so. दुनिया में हर इंसान जानता है कि वो माधुरी दीक्षित नहीं है, श्रीदेवी नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन अगर हमें कोई श्रीदेवी जैसा कहते हो बहुत अच्छा लगेगा ये. This is actually what life is all about. You have to understand this psychology. Everyone knows that I'm not like Shridevi. But अगर मेरे husband कहें बिल्कुल श्रीदेवी जैसे कहते लेकिन मैं एक बार नहीं सोचूंगी कि मुझे बेवकूफ बना रहा है, मुझे उल्लू बना रहा है, ये मैं नहीं सोचूंगी. मैं यही सोचूंगी what day मेरा मूड बड़ा अच्छा है. So it doesn't take money to show your gratitude, thankfulness, and love. So don't be a miser. कंजूस ना बनो. एकदम कंजूसी नहीं. आप जितने लोगों से हो सकता है प्यार से बात कीजिए, प्यार से कहिए, थोड़े अच्छे शब्द कह दीजिए ना. क्या फर्क पड़ता है मैम अगर मैं कह दूं आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, कौन सा मुझे ये साड़ी कर देखना है. हाँ आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने. अब पूरे वर्कशॉप में मैम अच्छी कर रही हूँ, रिसोर्स पर्सन ने साड़ी दे दी. Human nature. You understand? बार बार एक ही बात है. Take the psychology of children. वो PhD टीचर्स को देखते हैं आप. कौन है आप PhD टीचर? आप ना? हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है. अब जब मैं स्टूडेंट थी तब भी होता था टुडे आल्सो. PhD टीचर के पीछे 5 बच्चा लटका है. PhD टीचर जहाँ जाएगा 5 बच्चे उसके साथ जाएगा. You know sometimes I feel jealous of मेरे पीछे इतने बच्चे नहीं होते. PhD teacher is absent. Everybody is absent. Sorry यार, हम PhD पास. PhD टीचर के बच्चे को कुछ नहीं कहते बच्चा. सिर्फ एक धमकी आ काफी यार, suspended PhD. You see? So psychology is very important. You have to understand children's psychology in order to become a good teacher. Your content is okay, very good. I do understand. You cannot deliver wrong content in the classroom. But content alone is nothing. Role of content is 20%. आजकल ऐसा कौन बच्चा है बताओ मुझे जो नर्सरी से ट्यूशन लेता है? ऐसा कोई बच्चा है?
फ्रॉक मेरा सेल्फ एस्टीम हाई हो गई। मुझे लगा आई एम समथिंग, आज मुझे कुछ ऐसा डिलीवर करना है कि सारी बातें सच हो जाए। अगर आप कहते हैं मैम एक ऐसी जगह से आई है जिसको कोई नहीं जानता, मैम पता नहीं कब से सीबीएसई की रिसर्च पर्सन है, कुछ खास वर्कशॉप हमने देखे हैं, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा नहीं बोलती हैं फिर भी हम लोग आप सुनेंगे तो मुझे कैसा फील होगा? अरे यार यहाँ तो कुछ परफॉर्म ही नहीं करना, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल। सो रिमेंबर सेल्फ एस्टीम वो है जिसकी बलबूते पर आप शहंशाह बन सकते हो पूरी दुनिया। आई टेल यू स्मॉल स्टोरी। एक कुआं was a well और उसमें बहुत सारे मेढक गिरे, frogs। ये was the story। अब ये हर मेढक कोशिश कर रहा था कि मुझे कुएं से बाहर निकलना है, I have to come out of the well। Everybody was trying। थोड़ा सा ऊपर जाते थे फिर गिर जाते, फिर ऊपर जाते थे फिर गिर जाते। Everybody was trying। And then finally they started thinking, oh, नहीं निकल सकते। The entire life will be here and will die here। So they came। In the meantime, there's a small frog, very small frog, and he was trying to climb। Everybody started shouting, अरे तुम इतने छोटे हो, जब हम लोग नहीं कर सकते तुम कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, मत चढ़ो। The frog continued और जोर से लोग चिल्लाने लगे, नहीं, please come down, you cannot do it, it's impossible। When the seniors could not do, how can you do it? The frog continued। Finally, that small frog was able to come out of the well। And when he came out of the well, सारी मीडिया के लोग आगे आए। सर कैसे किया आपने? पॉसिबल कैसे हुआ? सब लोग बड़े बुजुर्ग अंदर हैं, सब सीनियर लोग अंदर हैं, आप कैसे बाहर आ गए? How is it possible that you could make it? Okay, the frog silently answered, because I am deaf। मैं सुन नहीं सकती। You understand? The entire world will work to pull you। Entire world। अगर इनका इंक्रीमेंट इस साल ज्यादा हो जाए ना इनसे सेशन के एंड में, तो देखेंगे दुश्मन हो जाएंगे। अगली बार मैं आप लोग इस टेबल पे बैठेंगे, इस टेबल पे बैठेंगे। It's a fact। अगर मम्मी और पापा 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, उसको थोड़ा ज्यादा बड़ा पीस मिल गया केक का, we become jealous। तो
action you release. Remember this. So even if you cannot say sorry to me, if you've done something wrong with me, you cannot say sorry to me. Say sorry. Okay. People will listen. Messages will reach. पहले होता ना वो कबूतर मैसेज पहुंचाता है. आप इमेजिन करो ये कबूतर है. कोई एक कबूतर है हमारे चारों तरफ जो हमारे मैसेजेस को पहुंचा रहा है. Make life very simple. Life is not complicated. We have made it complicated. Life is a very simple place. Make life very simple. आप कह दो मैंने फलाने को थैंक यू कहा बस हो गया. मैंने उसको सॉरी बोला हो गया. That's done. So don't think that life is very complicated. How will I do it? How can I kill my ego? So don't. And tell the children also to think like this. Whatever we are discussing today, it should go back to your kids. How will it go back? आपको तो 5 hour का सेशन भी मिलेगा बच्चों के साथ. So how will you deliver it to your kids? How will you deliver all this to your kids? How? कैसे करेंगे? In your attitude, your behavior, of course, like for example, greeting. You greet them first. And when you are teaching. Suppose you are teaching, which number is bigger? So you write two numbers, 2 and 5. Come on children, which is bigger? Of course children will say 5. Or maybe you will explain 5. जो भी होगा. And so 5 is a बड़ा number and 2 is a छोटा number. लेकिन देखो दोनों पास पास में चलते हैं. So there's no one big and no one small in this world. हम सब एक हैं. सिर्फ हमारे आगे ये साइन लगा हुआ है. ये साइन कभी तो कर सकता है. अगर 5 के 2 के आगे 1 लगा दे, 12 हो जाएगा. 12 बड़ा हो जाएगा. साइन बड़ा हो. So this is how while you are teaching, you know, connect these values with your subject and deliver. आज के schools में CBSE के हिसाब से there is no value education teacher. There is no separate value education teacher. All teachers are supposed to teach value education to kids through our subject, through our content. When you're teaching sports, such a lot of things you can teach. Gratitude you can teach, sportsmanship you can teach, honesty you can teach, physical behavior you can teach. So many things can be done. So remember when you're teaching, try to give some good inputs to the students. बार बार अच्छी बातें सुनते हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी किल होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है. हम क्यों कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल बातें सुननी
कि मुझे देश का नाम बताओ या उस कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, तो टीचर ने ऐसे ऐसे घुमा 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 कुछ कुछ ग्रीन देखा, तो टीचर ने हाथ रखा, कौन सी जगह? तो बच्चे ने कहा मैम फील्ड, प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड। टीचर ये जो हमेशा खेलने का मन करता है, जब पैसे I was observing the class. Actually, it was a case of my school. I was observing the class. Observer किया, बात वाली टीचर को लेकिन आप बात करिए, अगर बच्चे ने प्लेग्राउंड में गलत क्यों? Why is it wrong? I want to ask. वो बहुत से क्या अपनी इंट्रोगेंजेटिक फेल था, टीचर से ऐसे वो आपको पता है ना, आपका परसेप्शन है कि इंट्रोगेंजेटिक टेक्निकली बच्चों को नहीं पता चल रही है, लेकिन ब्रेन तो प्लेग्राउंड। अब अगर हम आपके सामने लाल रंग दिखा कर कहें वो तो क्या है, तो she can say खून, he can say heart, yes or no? Perceptions are different. So always understand this. Children have different perceptions. Everybody is not the same. There are 40 different minds. So don't think that whatever you are thinking, the child is thinking the same thing. Child may think something different also. Okay? Next, sir. Next. Okay. Next. Most important line I put in red. Do not label children. मैंने बहुत क्लासेस में देखा है, टीचर्स टॉपिक, ए श्रीवास्तव, हाँ, सब ठीक है ना? His identity is not Srivastava. His identity है बोलना ही है तो बोलो Eman, all okay? That is better. क्या जी? कछुआ, हाँ बात सब ठीक है ना? It's not. तो हम लोग समझते हैं कि we are doing, हम लोग playful हो गए, हम लोग fun and back में, but this kind of fun is not.
कल भी मिलेंगे। When happiness will not stay, then the bad days will also not stay. They have to be optimistic and empathy. What is the meaning of empathy? What is empathy? What does it mean? Empathy means very good, very good. To put yourself in the shoes of other people. जैसे मान लो आपने सारी टॉपिक खाई, मैं ये भी सोच सकती हूँ, ऐसे लोग वर्कशॉप में आके टॉफी खाई, ये भी सोच सकती हूँ, जरूर घूमेंगे, सुबह कुछ खा के निकलेंगे, चाहे वो टॉफी या टॉफी, चलो let us give them some time to eat. I can think like this. So you never know अगले इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है। आपको पता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है आज? आप वही देख रहे हो ना जो आपको दिख रहा है। So every human being is like an iceberg. You can only see 1/4. 3/4 is underwater. Remember this. कोई बच्चा, कोई पेरेंट, कोई इंसान आप सब वही देख रहे हो जो वो दिखाना चाहता है। हम अपने बॉडी के पास हम नहीं दिखाना चाहते मैंने कपड़ा पहना, लेकिन आपको तो ये कपड़ा ही दिख रहा है। हो सकता है इसके अंदर मेरा बहुत गंदा जला हुआ सड़ा हुआ बॉडी है, आपको तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। आप क्या कह रहे हो? हाँ भाटी कितना अच्छा कपड़ा पहना है ना, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप अपना सड़ा हुआ बॉडी देखोगे, जला हुआ बॉडी देखोगे, तब आपको समझ में आएगा मेरे अंदर कितना कष्ट है। So try to understand this, that whatever you see in this world is just the 1/4. The remaining 3/4 is within. You cannot stop. So don't be very harsh, don't be very rude, don't be very ugly to people, just because that 1/4 is not good for you. Maybe the reason is hiding in the 3/4. एक इंसान बहुत गुस्सा होता है, हर बात में गुस्सा हो जाता है, उसका रीजन उस 3/4 के अंदर हो सकता है, आपको नहीं। So mercy, have mercy on such people, forgive them, and just let it happen. कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी इंसान अच्छा हो सकता है। Finally, respect diversity. Teachers have to be very, very respectful for all. You can have special children in your class. You can have hyperactive children. You can have children from all religious backgrounds, all caste, all sex, check, whatever. Have respect for them. You know, sometimes what happens, small things like our religious values become so strong on us that we forget to respect other religion. Sometimes, you know, आपकी क्लास में एक मान लो पैर से बचा है, बहुत टीचर्स कहते हैं मैम सो मेरी क्लास में क्यों डालना, उस क्लास में डाल देना, सिमरन की क्लास में डाल देना, शी इज वेरी गुड, मेरी क्लास में
मैं मेन को अगर आप 4 तो घर से बाहर है आप किसके लिए है तो गिल्ट कॉन्शियस मत करो that मैं बहुत घर पर टाइम दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ मैं घर से बाहर हूँ मैं ऐसे हूँ नहीं you are not at the end of the day whatever you are doing is actually going back to you so remember money cannot buy everything but money can buy your thoughts money can actually buy a lot of things अगर मैं वर्कशॉप करने के बाद एक बड़ा सा चॉकलेट के बच्चे के लिए ले जाऊँ it will buy his happiness he'll be happy there are many things which money can buy so अगर आप जॉब कर रहे हैं कभी भी गेट कॉन्शियस never अगर आप एक बार गेट कॉन्शियस हो गए कि मैं घर से कितने दिन बाहर रहता हूँ या रहती हूँ मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आप कभी सुखी नहीं and when you are not happy you cannot make your children so you have to be happy and say yes I work for 12 hours a day because I want to give a lot of happiness to my family and see already आपका self esteem मोरल ऊपर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से happy नहीं दुखी हो काम मत करो सुख से happiness से work so this is how you maintain a work life next is time management and this very famous yoga which says if whatever you want to achieve in life you have to achieve in these 24 hours that depends upon you what you want to achieve सबके पास 24 ही घंटे हैं बच्चों को बचपन से टाइम की वैल्यू समझाइए एक मिनट की वैल्यू समझाइए एक सेकंड की वैल्यू समझाइए और खुद भी समझिए मेरा at this age I am 51 years old at this age also my morning 4:30 to evening 10 o'clock time is fixed I never deviate never ever और अगर मैं आज deviate करूँगी तो बंद हो जाएगा ये मेरा basic fundamental rule है life and that is the reason you know many people tell me but how are you able to do so much because I never waste time अगर मैं टीवी भी देख रही हूँ उसके साथ साथ मैं कुछ काम कर रही हूँ मैं कपड़े भी सिल जाती हूँ मैं व्हाट्सएप आंसर भी कर रही हूँ मैं इम्पोर्टेंट कॉल्स भी ले रही हूँ बट दैट यू how you will manage depends upon your work schedule depends upon your work depends upon how much you want to achieve in life that is all but you will never get bored सर पीठ कर खून भी निकाल दीजिएगा तो भी नहीं निकाल तो ग्रम्बल नहीं करना आपने 24 घंटे को अरेंज करना है कैसे अरेंज कर सकते हैं दैट मीन्स प्रैक्टिस easiest thing which I can suggest to you is कम से कम 7 दिन आप हर चीज लिखिए मैंने लिखी है कैसे अगर मैं बाथरूम में हूँ 15 मिनट में वो भी लिखती हूँ बाथरूम 15 minutes brush 3 minutes
लगाया, ब्लशर लगाया, काजल लगाया, उस गंदे से बॉडी में, जिसके अंदर पता नहीं कितनी गंदगी है. तो when you can be so good, why do that? Understand. Keep life very simple. There is no a square plus b square plus polynomial plus Pythagoras theorem in life. Very simple. बिल्कुल नर्सरी के बच्चों जैसी पढ़ाई हो रही है. Complex मत करिए, ambiguous मत करिए. जितनी आप complexity बढ़ाएंगे, your life will become more and more and more complex. Finally, you will become a person who loves nobody.
और वहाँ पर एक बीच वाला है जहाँ से गाड़ी ऊपर जाती है, and I was not in the group. मेरे पीछे गाड़ी की लाइन लग गई. Somebody was shouting, "Hey, call myself, Priya." So many things. And my elder sister was with me. She said, "I'm getting out of the car and I'm going. I cannot sit with you. It's so humiliating." I said, "You have a choice. You can move out, but I can't move out. And I'm sitting in the car, I have to take it." So what did I do? I said, "Here, कर दो. आपको दिक्कत होगी, मेरे पीछे वाला किसी को ज़्यादा
judgmental, don't be rude, don't be harsh, don't be ugly, don't be jealous. The more you're kind, the more happy you'll be. Next, rewire the negative bias. ये last. यानी जैसे ही आपको अनाउंस किया गया होगा कि संडे ये प्रेजेंट वर्कशॉप, तो पता है पहला संडे नहीं एक छुट्टी मिलता है सब वर्कशॉप पहला पहला फीलिंग बाद में आपको समझाया गया होगा या आपको खुद समझ में आया होगा धीरे धीरे ना मानिए वो भी नौकरी कर रही है वो भी इतनी भी छुट्टी नहीं मिली अरे एक संडे तो है ऐसे है तो बहुत सारी चीजें आपने अपने आप को समझाया होगा बहुत अच्छी वाली ज्ञान है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर धीरे 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 आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो अच्छा ठीक है आज देखिए तो the very first thing that we go in our life is negative. Negative. अगर आप आज घर जाओगे आप देखोगे कि आपके घर में थोड़ा चीजें इधर उधर है तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में आएगा दिन भर में भी सोचो आप ये नहीं सोचोगे आज संडे था थोड़ा रिलैक्स टायर्ड हो गई कोई आया होगा घर में उसने गंदा कर दिया होगा मैं ऐसा नहीं सोचता सबसे पहली चीज दिन भर सो रही हो क्या किया तुमने घर में मैं इतना काम कर गया यार sleeping. We have a tendency of negativity in our life. Yes or no? हम पॉजिटिव सोचते नहीं हैं पहले हम सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हैं इस साल जरूर मेरा इंक्रीमेंट कम हो एक बार हम किए थे मैम के साथ बहस बदला में काम कर and you know negative is so strong आप हजार अच्छी चीज आपकी लाइफ में हुई उस इंसान के साथ अगर एक नेगेटिव हो जाएगा ना यू रिमेंबर इट फॉर इयर्स और आप सारी अच्छी बातें भूल जाएंगे इसका डिपिक्शन है हमारे माइथोलॉजी में राम had 10 heads राम had only one head this is actually to depict the fact negativity is in multiples and positivity is small less वो होगा या नहीं जब भी आपको अपनी बीवी से डिवोर्स लेना होगा तो आपको सिर्फ गंदी गंदी बातें आती हैं अच्छी बातें नहीं आती जब हम रिकंसाइल करते हैं डिवोर्स नहीं दिस इज अ फैक्ट रिमेंबर दिस इसको ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन इट नॉट द बैड ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग नॉट द बैड इसका मतलब है रीवायर नेगेटिव बाइस जब भी मन में कुछ बुरी बुरी ख्याल आए या तो ना मुझे रीवार करना मुझे अच्छा लगे बहुत खराब लग रही है आपकी लाइफ तभी बहुत सुंदर वेरी नाइस वेरी गुड रीवार ट्रेन योरसेल्फ टू स्पीक गुड 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 सो यू बिकम अ गुड स्पीकर फाइनली ट्रेन योरसेल्फ Ma'am, theoretically it's different, but practically it's very difficult. very easy try to नहीं शादी होगा क्या है ये उसका फेस ही है तो मतलब अच्छा ही बोल रहा है पुलिस वाला भाई तो पुलिस ऑफिसर टीचर हो गया पुलिस वाला My mother is like, so I still love you mom see I know it is difficult it will not happen overnight but why we are discussing this so that we can at least start better late than never and our children can start at a very early stage
तो अच्छी वाईफाई नीचे वाला नीचे वाला वाईफाई कनेक्टेड है कौन सा वाला नीचे वाला किससे है कनेक्ट पासवर्ड होगा उसका एडमिन वाला हाँ देख ले तो
कार्ड भिजवाना एक बार। इंट्रोडक्शन पे आ गए, चैप्टर पे आ गए, वेरी गुड। देन व्हाट डू वी डू? एक्सप्लेनेशन हो गया, देन व्हाट डू वी डू? फिर क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर्स के बाद क्या कराते हैं? ये सेक्शन बचा हुआ है। क्वेश्चन आंसर के बाद क्या कराते हैं? रिकैपिचुलेशन करा दिया, फिर क्या करते हैं? चैप्टर खत्म करने के पहले इवैल्यूएशन, होमवर्क एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट खत्म चैप्टर। इंग्लिश में वैसे ही पढ़ाते हैं, हिंदी भी, मैथ्स भी, साइंस भी, सोशल साइंस भी, संस्कृत भी, ऐसे पढ़ाते हैं ना। तो दूसरा तरीका, वाह कितनी मजेदार बात। अब आप खुद ही सोचो, कितना मजेदार बात। इंग्लिश भी वैसे ही पढ़ाते हो जैसे साइंस पढ़ाते हो, मैथ्स भी वैसे ही पढ़ाते हो जैसे संस्कृत पढ़ाते हो, हिंदी भी वैसे ही पढ़ाते हो जैसे साइंस पढ़ाते हो। कितना मजेदार है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। आई हंसी। अब सोचो हंसी आ रही है कि नहीं आ रही? कहेंगे मैम तो क्या करूं, अब कैसे पढ़ाऊं? सबसे पहले आप ये समझो कि आपका सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता क्यों है। How many of you are language teachers? English, Hindi, Sanskrit, Urdu. कितने लोग हैं language teachers? शर्माने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। Very good. Can any one of you please tell me why do you teach a language to a child? Any language. Why do we have English, Hindi, Sanskrit, Urdu, German, French in schools? Why? What is the purpose of having a language? Yes? अभी मैं करता हूँ। वेरी गुड। और एक्सप्रेस कर पाए, contribute to the society. What you are saying, understand about the society. वो बड़े लोग करते हैं क्या understand society? वो भी तो करते हैं ना। सुनिए, आप लोग अब मैं बताऊँ
fighting spirit, endurance, sportsmanship, यही नहीं हुआ तो 15 साल स्पोर्ट्स स्टार्ट हमने साइंस सिखाया, बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल ही नहीं, बच्चे में इन्फ्लुएंस स्किल ही नहीं, मैंने 15 साल से कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ फैक्ट्स दिया, वो तो गूगल भी दे सकता है, खान सर भी दे सकते हैं, अन अकेडमी भी दे सकता है, then why school? Get my point? So think of this and introspect. Thank you. We are waiting for lunch. I think we break for 20 minutes around. Let's make it a little fast. This is the most challenging phase for both of us, isn't it? Don't sleep and don't let me sleep also. So thank you so much, school, for this wonderful patent dish of Bihar. Okay, all-time favorite of Biharis, or as we all know, Biharis of Bihar. Okay, so thank you for this wonderful lunch. Now, we were discussing the ways children learn. हमें पता भी नहीं चलता हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं. Mostly बुरी चीजें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं. आप जैसे मैं भी मेरा बेटा स्कूल में था तो he was very young in fact. I think he was in nursery if I remember correctly. वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था और उसकी एक आदत डेवलप हो गई. वो हर बात पे कहता था साला कुत्ता. मैं आपको बेटा मुझसे नहीं साला कुत्ता. मैं क्या खाया साला कुत्ता. तुम कहाँ गए थे साला कुत्ता. मतलब every time he used to say this. 15
रियोश करो, फिर दूसरी पैटर्न लाओ, फिर उसके ऊपर बनाओ. It's a more difficult process. So always unlearning is more difficult than learning. But of course you have to unlearn. If you want to learn, you need to unlearn also. But it is a more difficult process. So शुरू में कोशिश करनी चाहिए कि in the beginning से ही हम बच्चों की behavior front को ध्यान रखें. The next is cognitivism. Now what does the meaning of cognition mean? Cognition means brain, mental ability. Cognition फिर हम और आगे जाते हैं तो metacognition को करते हैं. Beyond the brain कैसे हो गया? आपने रामानुजन की बायोग्राफी देखी है? If possible, watch it. It's known as the Infinity. It's a biography of Ramanujan, the great mathematician. उनकी बहुत सुंदर बायोग्राफी है in the form of a movie, and it's called Infinity. You know, Ramanujan used to solve maths, and he himself did not know how to solve. Sometimes it happens. आप कुछ कर लेते हो, आपको खुद ही नहीं पता कैसे किया, ये मुझे नहीं आता है. How did I manage? So this is metacognition. Beyond your knowledge, periphery also there is a knowledge periphery. Maybe मैं बहुत सारी चीजें वर्कशॉप
इसको अलग धो, कलर को अलग धो, कलर को ऐसे करो, व्हाइट को ऐसे करो, और साफ करना है फिर ब्लू डालो. We learn from our own experience. None of us were experienced. But we learned. So many things we learn from experience, isn't it? Nobody teaches us, but we learn. So this is a great source of learning, our own experiences. And finally, social and context. मैं आपकी माँ महाराष्ट्र से मैं इतने ब्यूटीफुली बैठकर लिट्टी चोखा खा रही थी. How did she know? Society has taught. When she came to Bihar, she must have realized कि यहाँ लोग बड़ा प्यार से लिट्टी चोखा खाते हैं. So what is this लिट्टी चोखा? अच्छा तो ऐसा होता है. उसको ऐसे खाया. Yesterday I tell you, when I was sitting with my other co-resource persons, we were 3 people in there who were both of Delhi से थे, मैं यहाँ से. अब उनको चावल के साथ भुजिया और दाल दिया गया था. वो तो लोग खाते हैं. चावल दाल मिलाकर भुजिया से खाते. उसके बाद आई कटोरी चटनी, मीठी वाली चटनी थी. Deoghar is near Bengal, no? So the culture is a little influenced. So चटनी आई और कटहल की सब्जी आई, ठीक है? और पूरी थी. तो हम बिहार में कटहल की सब्जी चावल के साथ. That is our favorite, चावल के साथ खाते हैं. अब वो उनके यहाँ कटहल नहीं होती है, जैसे दिल्ली में पटना वाली कटहल नहीं होती है. They don't eat कटहल. Now they were asking, ma'am, how do we eat this chutney? With what do you eat the chutney? Because they have never eaten meetha chutney, tomato, So I said, ma'am, if you ask me, I eat chutney with puri. I like it that way. So puri is not butter खाएंगे. I said, no, चावल के साथ butter खाएंगे. This is baap with this, all this permutation, combination is so difficult. They don't know. But then when they were sitting with 4 Biharis at us, they learned कि पूरी के साथ चटनी खाते हैं, कटहल की सब्जी चावल के साथ खाते हैं. So this is how we learn from society and context. अभी आप में से बहुत सारे लोग, especially when you grow up, you learn more. हम में से बहुत सारे लोग कानून इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि हम जेल नहीं जाना चाहते. At this age, we don't want to go to the jail. लेकिन जब हम 18 साल के थे, 16 साल के थे, तब आपको डर लगता था जेल जाने से. तब हमें लगता पुलिस वो क्या करेगी? See, I'm so powerful. जैसे जैसे अपने मसल्स का पावर कम होता है, आप contextual and social learning ज़्यादा करते हैं. I don't want to do anything जिसको society मेरे को उंगलियां उठाए. I hate my husband, but I don't want to divorce him. लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में मिताली मैडम करते हैं, तो डिवोर्स करो. Again, I'm just giving you example. So, I understand my point. हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में
जो आजकल होता है, आपके प्रिंसिपल मैम बुलाती है हमको, कहती है क्यों परसेंटेज 1% कम हो गया, ये परसेंटेज होना चाहिए। आपका बैंड बजता है, आप बात सुनते हो, आप जाकर बच्चों को डांटते हो। Do you think the situation will improve by this? It will not. Because now why the average is coming down? Suppose if you do a survey on this, my
था हुआ ना एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है व्हाट इज मीनिंग जब आपका एंगेजमेंट होता है आपका छेका होगा इसका मतलब क्या होता है हाँ आपने टिकट ले लिया बुकिंग हो गई आपकी आप एक बार जब आप सिनेमा का टिकट ले लीजिएगा फिर आप दूसरे सिनेमा में नहीं जाइएगा that is a agreement so you should be engaged children should be engaged अगर उसको आप पैस एंगेज नहीं करोगे तो बदमाशी में एंगेज हो जाएगा वो इंडिसिप्लिन बिहेवियर में एंगेज हो जाएगा वो कक्षा में तरह तरह की ध्वनियां निकालेगा वो चौक फेंकेगा एरोप्लेन बनाएगा डिस्टर्ब करेगा सर मैं ड्रिंक वाटर और आप कहेंगे बहुत इंडिसिप्लिन क्लास indiscipline नहीं है they are children they are 21st century children they want to be engaged you know 21st century बच्चे क्या कहते हैं don't teach me the way you want teach me the way I want आपको उनके तरीके से so keep them engaged now सवाल ये होता है Chinese बच्चे हैं how to keep them engaged give them all the work you take a back foot suppose you go to the class today and you have to teach a very simple topic germination of the seed आपको सब लोग समझते हैं germination maths relation की टीचर सब समझते हैं germination of seed ठीक है वेरी गुड आप जाते ही क्लास में सब पे एक चमा दे दीजिए कुछ चने ऐसे जो जर्मिनेट नहीं किए हैं कुछ जो जर्मिनेट किया है कुछ जिसको आपने पानी में भी नहीं सोक किया है और उसके बाद आप बनाकर अपना इंटरेक्शन चालू करिए भाई क्या हुआ तुम्हारा चना क्या है क्या करते हैं उसमें क्या है उसमें क्या नहीं है क्यों नहीं जर्मिनेट किया वो सूखा है उसको क्या करना पड़ेगा ऐसे children engage everybody क्या है मेरे पास इसका अच्छा है इसमें सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छे से ये करना है everybody is doing their own work now if I go to the class they say okay children sit down today we will study germination of seed what is germination germination is the growing of जैसे आप पीछे मुड़ेंगे वो engage हो जाएंगे they will be engaged in something else so we have to keep the child engaged so that they are doing something good in the class there are many methods of keeping children engaged इसी को हम pedagogy कहते हैं pedagogy को देखेंगे दो चार pedagogies मैं आपको बता दूंगी so that those pedagogies we use and keep children engaged next please okay this is what I started telling you effective teacher means engage children और जब बच्चे engaged होंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज नजर आएगी जब आप बच्चे को engage करेंगे बच्चों को engage करके पढ़ाएंगे आपको महसूस होगा there will be a change in their behavior आपके स्कूल में PTM होता है you have PTM in your school do the parents come and tell you sir देखिए ना बहुत टीवी देखता है थोड़ा डांटिए ना इसको सर आपको गुस्सा नहीं आता पेरेंट कैसे कहते हैं नहीं आता क्या करते हैं जवाब देते हैं आप लोगों को अगर बच्चा घर में टीवी देख रहा है और पेरेंट कंप्लेन करने आए तो आप लोग क्या जवाब देते हैं गुड वेरी गुड आप नहीं करते हैं आप क्या करते हैं और कुछ सर घर में देखता let's go into the root of this why do the parents सही बात है तो सही बात वो घर में टीवी देखते हम क्या करें हम घर जाके टीवी में करेंगे चाहे घर जाके उसकी टीवी छीन लेंगे या मोबाइल छीन लेंगे फिर भी मेरे डाल देगा सिर्फ आप ही स्कूल में नहीं हमारे में नहीं सब स्कूल में the root is they feel when you will talk to the child will listen to you and the child will not listen to the parents you see what is the role of a teacher where a teacher is actually sitting in the life of a child and the parents have the
एग्रेशन शो करता है, कोई जेलस होता है, कोई गंदी गंदी बातें कहता है, कोई कभी थैंक यू नहीं कहता, प्लीज आप अपने वेसल को बड़ा रखेंगे और ये सोचेंगे वो उनका एजुकेशन। मेरा एजुकेशन क्या कहता है? Forgive and forget. My education tells me forgive and forget. और I will do that. इन चीजों से मैं pull down नहीं हूँ। Next. Okay. So here we go to the technical aspect. If you want to bring about some intended learning outcomes, what is the meaning of learning outcomes? Anybody knows what is the meaning of learning outcome? I saw all of you writing lesson plan you just did. So you don't write learning outcome, learning objectives. What is learning objective? What is the meaning of learning objective? After teaching the particular topic, what the teacher student learn. Very good. Please clap. Very good. Very good. Until and unless the learning outcome is clear, there is no learning and no teaching is sure. Now, for example, this is A और मैं 6A का संस्कृत टीचर हूँ। मुझे 6A में जाना है। तो 6A में जाने के पहले मुझे ये सोचना होगा, मुझे तय करना होगा, मुझे प्लान करनी होगी कि आज जो 40 मिनट या 45 मिनट की मेरी घंटी है, what will I teach in those 45 minutes so that my child knows 1, 2, 3 these things. This is known as learning outcome. यानी in the coming 40 minutes, 45 minutes, जो भी आपका period है, what your child will learn, that is a learning objective. So your child will learn rit lakar, whatever, जो भी होता है. Your child will learn the name of 5 flowers, Sanskrit. Your child will learn the name of 5 wild animals in Sanskrit, whatever it is. और क्लास में से निकलने के पहले उसको चेक किया, मेरा लर्निंग आउटकम अचीव हुआ? Clear? So, intended learning outcome, teaching learning activities उसी के लिए घूमेंगी। अब मेरा learning outcome है कि मैं बच्चों को 5 एनिमल का नाम बताऊंगा। तो हम क्लास में जाकर फ्लावर्स का नाम बताएंगे। हम क्लास में एनिमल के बारे में बात करेंगे। So this is activities to be related to our learning outcome, and summative and formative assessment will also be related to the learning outcome. अगर आज हमारा learning outcome है एनिमल्स का नाम बताएंगे, जब हम assessment लेंगे बच्चों का तो एनिमल्स का ही नाम पूछेंगे। ऐसा बहुत समय होता है टीचर्स, ध्यान दीजिए, आपके साथ भी होता होगा। आप क्लास में पढ़ाते कुछ और हैं और जब प्रश्न पेपर बनाते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको पूछते कुछ और। So the learning outcome and the assessment are not hand in hand. They don't gel with each other. This is one of the most common reasons why children fail. सर ने पढ़ाया था आम, पूछा ही नहीं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं उसमें, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पढ़ाया क्या है। पढ़ाओगे तो अच्छी चीजें ना पूछेंगे। So not very Bloom's taxonomy अगर आपने BA किया है, Bloom's के बारे में Bloom's taxonomy कहती है जब आप लेसन का पढ़ा रहे हो ना, उसी समय लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाया और उसी समय कुछ क्वेश्चंस भी बना लेने चाहिए असेसमेंट। जैसे ही आपके प्रिंसिपल या आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन पेपर मांगे, अपना लेसन प्लान लिस्ट उठाइए, वही क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपने बनाया ही था अपने लर्निंग आउटकम पर बेस करके। So जैसे आपसे क्वेश्चन पेपर मांगा जाए, you pick up those questions, put it up in a question paper. Of course you can elaborate, make it small, whatever, and then you put it up in a question paper. And the question paper is ready.
5 to 10. Any other answer? 20 minutes. Any other answer? 40. Okay. Any other? 15. 0 to 5 नहीं बोला पूरा हो जाएगा 40 minutes. You're very close. Attention span as per the recent study says 6 minutes. 6 मिनट के बाद आप जो भी क्लास बोलते हैं वो नहीं सुनते बच्चे समझते हैं मतलब 100% नहीं समझते धीरे धीरे 6 मिनट के बाद रिटेंशन कैपेसिटी कम होती जाए और आप कितने देर बात करते हैं क्लास में 40 मिनट्स का पीरियड है 40 मिनट 35 से 40 मिनट आप बोलते हैं और बच्चा क्या होता है पहला 6 मिनट सुना उसके बाद से वो ऑफ उसका बैटरी ऑफ होना शुरू हो जाता है 40वें मिनट में जो आप बोलते हैं चांसेस आर वो कोई सुना ही नहीं इसलिए 90% बच्चे होमवर्क करके नहीं आते क्योंकि होमवर्क का अनाउंसमेंट कब होता है क्लास में सारे जवाब आ भी थे देखिए हम कल से टीचिंग को थोड़ा चेंज करेंगे शुरू भी से होमवर्क करना ठीक है और 6 मिनट के बाद क्या कीजिएगा 6 मिनट के बाद कुछ एक्टिविटी आइस ब्रेकिंग कुछ नहीं आप एक जोक भी प्रैक्टिस सकते हैं आप शाहरुख खान को कोई डायलॉग भी बोल सकते हो आप बच्चों को खड़ा करके कह सकते हो ऑल ऑफ यू लेट्स स्टैंड अप कम ऑन एक नर्सरी लाइन है when you're happy and you know it clap your hands when you're happy and you know it and you really want to show it when you're happy and you know it clap your hands 11 12 9 10 7 8 6 5 4 3 2 1 hands you see children are so happy they will actually be happy आज सबको क्या हो गया अरे सर इतना अच्छे कैसे हो गए सर इतने प्यारे कैसे हो गए सर children will talk like this अब पानी फिर दूसरे 6 मिनट में पानी पी लो it will hardly take you 30 seconds but in those 30 seconds you can rejuvenate your children वापस 6 मिनट आपको मिल गया 30 सेकंड का ब्रेक आपको 6 मिनट का बढ़ा अदरवाइज आप पढ़ाओ किसी को कोई मतलब नहीं कुछ नहीं सुनेगा कुछ नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं समझेगा जबरदस्ती प्लान से खोल के रखेगा आपको दिखाने के लिए कुछ बहुत समझना मेरी बात समझ रहे हो give a break give a transition sort of transition किसी भी तरीके का transition इसी समय कोई अच्छी बातें कर लो इसी समय थोड़ा एक पजल एक क्रॉसवर्ड याद करके रखो चलो बनाओ जरा इसको एक पजल एक डायलॉग एक गाना एक वाटर ब्रेक एक एक्सरसाइज एक जिंगल एक नर्सरी राइम कुछ नहीं anything which can change the mood of the child will come for some 30 seconds. Next is these 21st century children. They crave for interactivity. They cannot remain quiet. They just cannot. हम लोग का major cause है बच्चों का very talkative. The child is very talkative. बहुत बात करता है, बहुत बात करती है. Actually ये उनका characteristic trait. चूंकि attention span कम है. अब attention कम है तो गहराई भी कम है. गहराई कम है तो बोलते रहते हैं. आप क्वेश्चन पूछो उससे पहले हाथ करते हैं नहीं. हमारे टीचर्स हमेशा कहते हैं please listen to the question. Then answer. They are board exam में बच्चे क्या करते हैं आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर पूछते और गलत करते हैं. जबकि they know the answer. So they crave for interactivity. उनको कुछ चाहिए बोलने के लिए. इसका क्या इलाज है? बीच-बीच में उनको बोलने दिया जाए. पार्टिकुलर का सेशन मत बनाइए. ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पूछो. बीच-बीच में बोलो. चलो बताओ. रीड करो. ये रीड कर रही है. चलो नेक्स्ट यू रीड. You read. Come on, tell me the answer. Okay, where are we? You come. Explain on the board. Actually, you write it. So keep engaged. Keep the children engaged. Don't go for a monologue. आप बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं. That way there are chances कि आप जो बोल रहे हैं उनको समझ जाए. ठीक? The next very important thing is their response time is very fast.
revolt of 1857. They want something diagrammatic. They want something diagrammatic, simple text. इसके बहुत सारे तरीके हैं राइट ऑफ यू. You can practice mind maps with them. You can practice conceptual maps with them. You can make timelines for them. ये आप गूगल पे सर्च करना. Graphic organizers maps. आपको कुछ भी लिखना होगा तो आप एक बॉक्स बना कर लिखना. Arrow डाल देना. Clouds बना देना. They will be very interesting. उनको बहुत अच्छा लगेगा. They are visual cravers. वो आँख से देखना चाहते हैं. हम भी वैसे ही थे. हमने शोले कितने साल पहले देखे. किस आपने कितने देखी होगी. मेरे ज़माने की मूवी शोले हम कितने साल पहले देखे होंगे. कम से कम 20 साल पहले तो जरूर देखे होंगे. आज भी शोले के सब सीन्स हैं. क्योंकि विजुअल हम ज़्यादा देर तक रीटेन नहीं करते. तो आज के बच्चे विजुअल ज़्यादा होते हैं. अगर आप थोड़ा बहुत विजुअल टेक्निक्स अपने ग्रुप में यूज़ कर लो ना, देयर आर चांसेस कि उनकी मेमोरी बहुत बुलंद रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी. नेक्स्ट okay, so your 21st century classrooms should be without walls. Without walls मतलब कल से दीवारें कम तोड़ने लगेंगे स्कूल में. Without walls मतलब online, outside the classroom, field trips, garden work, picnics, so many ways, laboratories, experiments, demonstrations. Next is multilingual. Anything इस बारे में बात करती है. आपके classes should be multilingual, especially the primary classes talking in mother tongue language. They should be interactive. They should be online. They should be PBL. PBL मतलब problem based. Not only project. Project तो है ही. Definitely सब एक project, right? मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से समझना. आप देखते होंगे नॉर्मली हमारे स्कूल सिस्टम क्या होता है. जनरल होमवर्क देते हैं. होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 1 to 4 होमवर्क. अभी बेचारा दो बच्चे मेरे क्लास में, उनको पिछले एक्सरसाइज का ही सम नहीं पता. सर इस एक्सरसाइज का सम दे रहे हैं, वो कभी होमवर्क कर पाएगा. वो गैप थ्रूआउट द ईयर बच जाएगा. So वो दो बच्चे को अलग से होमवर्क देना है. That exercise sum number 5 6. This is उसके हिसाब से उसको आपको वर्क देना है, so that he can also cope up with the other child, he or she. और एक चीज और है जो अभी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत लागू नहीं है. That is bring your own device. आप देखते होंगे कभी आप YouTube वगैरह देखते होंगे फॉरेन कंट्रीज में बच्चे अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना मोबाइल लेकर आते हैं क्लास और क्लास करते हैं. खैर हम अभी उतने डेवलप नहीं हैं. Maybe in future we should be prepared for this. Next slide, sir. How much time do we have? Okay. अगर आप ये टेक्निक्स नहीं यूज करेंगे आपका क्लासरूम ऐसा हो जाएगा. चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना? तो ये टेक्निक्स को यूज करें. नेक्स्ट now next sir. खत्म हो गया. This is the last thing this time. Okay. Now some techniques. These are some pedagogies which you can use for active learning in your classroom. क्या-क्या pedagogies हैं? The active collaborative classroom environment is dynamic, engaged, decision making, skill building, experiment, hands-on activities, trial and error. Please teachers करने दीजिए. हम में से बहुत लोग डरते हैं. गलत हो गया तो जब हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों को चूज करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों को चूज करते हैं. Because we don't want to go for trial. कहीं उसको ले गए प्राइज
तो हम जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम कहेंगे बच्चों से अच्छा व्हाट हैव वी स्टडीड इन दिस चैप्टर लास्ट 3-4 days बच्चे कहेंगे न्यूक्लियर फिशन सबसे बीच में न्यूक्लियर फिशन को बीच में फिर उसके चारों तरफ से एरो लिखा है क्या क्या पढ़ा उसके अंदर सर ऐसे वो ऐसे सारे पूरे चैप्टर को गोल 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 बनाकर एरो से आप पूरे चैप्टर को समझते इट इज विजुअल children will enjoy and we will that is used for summarizing the chapter. So summary या तो mind map से करिए, concept map से करिए, but do develop the habit of writing summary of the chapter. इससे क्या होगा total chapter का recapitulation हो जाएगा, revision हो जाएगा. Next, okay, some more methods: class discussion, brainstorming, role play, games, case study, debate, storytelling, dance, yoga, poetry, rap song, quiz, meditation, drama, singing, questionnaires, painting, campaigns and surveys. All these methods can be used for active learning. Normally, very difficult for teachers to digest. Teacher को ऐसा लगता है ना, हम लोग टीचर तो हमारी प्रजाति है जैसे हमें लगता है जब तक हम नहीं बताएंगे बच्चे को समझिए बस ये काम आपको मन रखना है और सारी बातें बच्चों को करनी है सारा होना सबको दे दीजिए बनाओगे तो खाओगे नहीं बनाओगे तो नहीं जानो तुम्हारा घर है क्या ये कहते ना बीवी को नहीं शादी नहीं करना दी हाँ मुझे लग रहा था अभी बनाता है So you know, अब एक बार मैं तो कहती थी कि जैसे चलाना हो चलाओ, जो करना हो करो, ये लोग मेरे साथ हैं, जैसे चलाना जो खरीदना हो करो, you see she will never complain because she knows that full freedom I have. You are so smart. Whatever you are earning, you know कि इसके बाद कोई लिपस्टिक और साड़ी खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन आप उसको खुश करो. How? By giving her everything. So that freedom should be for the children also. पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये आंसर करो, तुम ये क्वेश्चन करो, तुम ये असेसमेंट करो, तुम क्वेश्चन बनाओ, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है. पर तुम ही को करना है प्रेजेंटेशन. सब तुम्हारे हवाले से चलेगा. देखो वो कितनी चाहत लेकर पढ़ेगा, जानेगा. अभी तो उसको पता है ना whatever the teacher will teach, I will only learn that much. In that way, the child will only learn more and more and more. दिल मांगे वो. ये fact है. ये मैं ऐसे नहीं कहती. We have done it, and that is why I'm telling this to you. Otherwise, I would have never told. If the children experiment and bring the projects, you know, it is much more than your books. Much more than that. And they learn more like this. So give the voice to the students. Next. Okay, that's I. Now I want to tell you one small. Let's go back from this. I just wanted to discuss with you this. इसको slide show. Okay, with this we find out. Now, all this you've learned now, how to teach, what are the things you have to keep in mind, how to be a happy teacher, a happy person, happy classroom, positive environment, everything. Now, actually, when you go to the class, what should you do? Remember this, N-A-A-R.
इंट्रोडक्शन दे दो, मोबाइल नंबर बता दो, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बता दो, 5 वाइल्ड एनिमल्स के नाम बता दो, और कब इसका बेटा था, माइक नाम का शादी था। रिमेंबर, यानी हमारे 15 साल हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है, याद करो, याद करो, याद करो। उसके ऊपर जाके अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन। ये सीरियसली क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग का सिस्टम। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है इवैल्यूएशन, एनालिसिस, क्रिएशन। ये ऊपर तो कैसे अचानक रिमेंबरिंग सिखा रहे हैं? अचानक हायर ऑर्डर क्वेश्चन पूछे तो कैसे आंसर करेगा बच्चा? वो सिखाना कैसे सिखाएंगे? हम बच्चे को दिस इज फॉर द थिंकिंग प्रोसेस। हम बच्चे को थिंक करना सिखाते हैं, बच्चे को थिंक करना भी सिखाना पड़ता है। कैसे सिखाएंगे? क्वेश्चंस पूछिए। पहले पहले आंसर पूछना, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मधुमती कुमारी। मूवी थी ना मधुमती, नाइस नाइस। मधुमती, मैम नाम मधुमती है। कैसा क्वेश्चन हुआ? कैसा क्वेश्चन है? रिमेंबर। रिमेंबरिंग का अगला स्टेज क्या है? मैडम आपका नाम मधुमती क्यों है? इसका मतलब क्या है? एनीबॉडी नोस मधुमती का मतलब? आपको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही। बताओ मधुमती का मतलब? अरे जिसकी मति मधु जैसी होती है, जैसे मतलब नाम होगा। हिंदी टीचर कहाँ बताइए ना सर, क्यों मैं हिंदी की परीक्षा ले रही हूँ? मधुमती का मतलब क्या होता है? मैं आपको पता होगा नाम का मतलब? अरे मधुमती, मधुमती नॉटी चाहिए मेरे पास। मधुमती जिसके विचार मधु जैसे हो, सौम्य हो, प्यारे हो, ये सुंदर वैसे या अंडरस्टैंडिंग हो। तो जब आप मैम से पूछेंगे, जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, इट्स अ रिमेंबरिंग क्वेश्चन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? इट्स एन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। एप्लीकेशन। मधुमती एक सेंटेंस में डाल देता। गिव मी अ सेंटेंस ऑफ मधुमती। बताओ मधुमती को सेंटेंस में यूज करिए। एप्लीकेशन ऑफ मधुमती। हाँ, आपके शब्द मधु, मधु जैसे, मधुमती जैसे। ये हिंदी में वेरी गुड। मधुमती प्राचीन नदी का नाम है। एप्लीकेशन। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? एनालाइज। मधुमती संधि के हिसाब से कौन सी संधि है या समास है? चलिए ये होता है ना आपको का, या तो संधि या तो समास। क्या है मधुमती? संधि है, समास है, क्या है? कोई नहीं। क्यों नहीं है? मधुमती विग्रह समास क्यों नहीं है? मधुमती is not an example of विग्रह समास। Analyze. Got it? बच्चे ने समझा। इससे क्या होगा? वो विग्रह समाज को भी समझेगा यूजिंग मधु। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जजमेंट। इवैल्यूएशन इज जजमेंट। आप जज करके मुझे बताइए, मधु से इस्तेमाल होने वाले 5 शब्द लिखिए और ये बताइए कि उन सब शब्दों में से सबसे सुंदर, सबसे कंठप्रिय, सबसे कर्मप्रिय आपको कौन सा शब्द है? अब बच्चा अपना एनालिसिस करेगा। मधु से रिलेटेड 5 शब्द लिखेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर वो अपना एनालिसिस लिखेगा, अपना इवैल्यूएशन। या आंसर सबके अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैडम को मधुमती सबसे प्यारी लगती है, उनको मधुबाला सबसे प्यारी लगती है, मधुसूदन सबसे प्यारी लगती है। सही बात, ब्यूटीफुल। गॉट इट? मधुरिमा। अब आता है क्रिएशन। मधु क्या नाम है? मधुमती। मधु का इस्तेमाल, मधु और मती का इस्तेमाल करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं आप। 10 नए शब्द ये क्रिएट। यू गॉट माय पॉइंट? हाउ यू कैन चेंज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन and you help the child use his or her thinking skills. Very
So a bad teacher who doesn't help the children think is responsible for not creating scientists for the country. So you people are responsible. Create scientists or you don't create scientists. You are responsible. So creation के लिए हिंदी में एक बच्चा 15 साल हिंदी पढ़ता है, एक पोएम नहीं लिख सकता अपने से, क्यों? क्या लिख रहा है? स्पीच नहीं लिख सकता, क्रिएशन नहीं। तो क्रिएशन हर सब्जेक्ट में ऐसे साइंस में नहीं। वो 15 साल मैथ्स में अपने से फॉर्मूला में बना हुआ है, कोई अपना फॉर्मूला लिखना है, तब ना समझेंगे आपको क्रिएशन में ना सिखाया कुछ। आपने तो 15 साल वही फॉर्मूले को याद करना सिखाया। आगे बढ़िए, रास्ता खाली है, कोई दौड़ने वाला नहीं है आपके साथ, वो पूरा मैदान खाली है। ठीक है? So take the child from the journey, remembering to creation. And this is a wonderful ये मेरी बात अगर मानो, मतलब मैं पर्सनली मेरे लिए बाइबल, गीता, कुरान सब ब्लूम है, बिकॉज मैं मानती हूँ कि ब्लूम इज द बेस ऑफ एजुकेशन। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं समझता वो एजुकेशन नहीं समझता। मेरे स्कूल के हर टीचर के पास उसके लेसन प्लान रजिस्टर में उसकी डायरी में ये चिपका। मैं कहती हूँ सब देखो विजिट मारो, दर्शन से ही कुछ लाभ होता है। यानी आप ये कुछ नहीं टीचर्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स है, डिफाइन, आइडेंटिफाई, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कंक्लूड, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स। ये वर्ड्स यूज करके क्वेश्चंस बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एनालिसिस टेलिंग कॉन्ट्रास्ट। आपने क्वेश्चन बनाए, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इससे क्या होगा? बच्चा आपका इवैल्यूएशन, एनालिसिस,
पहली बार हम, दूसरी बार हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और तीसरी बार मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी, मैं तो क्या होगा? Your learning will be reinforced. Chances of forgetting, not understanding. एक बार में बहुत अच्छे से समझ आता, दो बार में समझे, दो बार में नहीं समझ आता, तीन बार में समझे, but then chances will be better. You will have better grades. इसके बाद हम आते हैं assessment पे. This is known as assessment for learning, not of, for learning. यानी टीचर पढ़ा वाली एक्टिविटी होगी, अब टीचर पूछेंगे तो आज तुम लोगों ने क्या पढ़ा? बिल्कुल सही जवाब, मान ये वाले सब कुछ गलत जवाब देते हैं तो टीचर को गुस्सा नहीं होना. इन्होंने गलत जवाब देने से मतलब ये है कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, जिसका मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, उस टॉपिक को मुझे फिर से पढ़ाना. This is known as assessment for learning. ये टीचर एक्चुअली खुद को असेस करता है. मैंने 40 बच्चों से क्वेश्चन पूछा, मैंने देखा कि तकरीबन 10 बच्चे इस पॉइंट को अटक गए हैं, सही जवाब नहीं दे पा रहे. तो वहीं पर अपना लेसन प्लान को लीजिए और वहीं पे लिखिए दिस टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. बात करिए क्लास में. उसके पहले दैट वो जो लिखा ना आपने, दैट इज रिफ्लेक्शन. ये टीचर का रिफ्लेक्शन है कि ये सब टॉपिक अच्छे से समझ में आया, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा का जितना मुझसे क्वेश्चन पूछे, 5 बच्चों से पूछे, 3 में गलत जवाब दिया. इसका मतलब इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करना है. और अगर सब अच्छा जवाब नहीं दिया नहीं दीजिए, और ओके. होता क्या है टीचर्स, हमारी कक्षा में ना ये छोटी छोटी गैप्स रह जाती हैं. आज मैंने पढ़ा वो बच्चा पढ़ाया बहुत खुश है, लेकिन असेसमेंट की हमें पता ही नहीं चला कि वेयर इज द लैकिंग. फिर कल नया टॉपिक पढ़ा और फिर नया पढ़ा तो वो गैप्स जमा हो जाते हैं और थोड़ा गैप होते लर्निंग गैप बहुत बड़ा हो जाता है. So what is learning? Transfer of knowledge. So when you transfer it, there should be no gap. तो इस गैप को सील करने के लिए ये तरीका है. Every period you must assess. Whether oral you can assess by giving some homework, you can assess by giving worksheets, you can assess by calling children on the board. Whatever you do, group assessment also do. But assessment is a must. Never leave your class without assessment. And reflection. Is it okay or is it not okay? If not okay, what's the part of yours? फिर जब आप अगले दिन जाओ उस क्लास में रिकैपिचुलेट करना चाहिए. I get your point. This was the last. अगर इस साइड को फॉलो करेंगे क्लास में, फाइनली अगर हमारा क्लास 40 मिनट का है, 5 मिनट लर्निंग आउटपुट लिखने में लगेगा, समझाने में लगेगा, 10 मिनट आएगी आप पढ़ा, 10 मिनट का कोई दिक्कत नहीं. 10 5 15 10 मिनट वी डू यानी 20 5 25. 10 मिनट यू डू, 30 5 35, 5 मिनट असेसमेंट, 40 रिफ्लेक्शन का. Get my point? So this is the ideal distribution. It's not that घंटी बजी हम शुरू हो गए, घंटी बजी तब one way monologue with a few questions. बहुत टीचर्स ऐसे भी होते हैं जब घंटी बज जाती है तो बोर्ड पे लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, होमवर्क सब उसी से देते हैं. जब घंटी बजती है अगला टीचर जो खड़ा रहता है उसका बीपी हाई, और फिर बहुत समय गुस्से में आपको बिठा देते हैं. देखो आशा बिठा देते. बेचारा सैंडविच मांगा बच्चा, वो फिर उस टीचर से डांट खाएगा, तुम लिखा क्यों नहीं? अब वो क्या बोलेगा? सर बिठा देता है उसे गुस्सा में. this problem is happening. पूरी दुनिया गुस्सा में शिकार है.
those pretty moments from life, and be very, very happy always. Happy teachers, happy principals. Thank you. If I ever sounds like any questions? क्या मीठा ऐसे ऐसे आपको डॉक्टर ने मीठा वगैरह पैकिंग करके रखिएगा कैसे काम चलेगा चलिए any questions please go ahead anyone no questions shall I write it down yes yes डिस्कस करने के लिए हाँ और के लिए तो नया चैप्टर जब आएगा तो बच्चा कैसे पता चलेगा मूड थी नहीं क्योंकि उसके साथ टीचर शेयर नहीं करेगा तो बच्चा कैसे पता चलेगा की शादी हो गई नहीं आप लोग कभी पहली बार टीचर बने पहला दिन पहला क्लास गए कि नहीं उसके पहले कोई सिखाया था आपको कैसे टीचर बनना not necessarily so there's always a first time for all of us in life always and children will learn about it from Google, from textbooks, from library books, from field tutoring, from blended learning, from parents, from tuition masters. But of course, when they have accumulated all that and they come to the class, then of course you will have a discussion. You will have a presentation. You will have something. In that point, if you find any weakness, improve upon it. Add on your message. What I mean to say is that I never mean to say that as a teacher you will not teach. What I mean to say is don't be an expert model teacher always. I know everything. मैं गुरु हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ. वो कॉन्सेप्ट और नहीं चलेगा. अब चलेगा, चलो मिलजुल के सीखते हैं. ये कॉन्सेप्ट चलेगा. आप भी थोड़ा सीखो, मैं भी थोड़ा सीखूंगा. अब आप भी थोड़ा सिखाओ, मैं भी थोड़ा सिखाऊंगा. दोनों मिलजुल के करें. Otherwise नहीं करेंगे. Thank you. Can you call it off? Now, many kind of development matters is not going to life. Many kind of maybe after the system that we are using in startup or hospital, that time you are always doing the corporate. Don't try to do it. Autocracy is not a good idea. Always, see, of course, always democracy doesn't work. Always autocracy doesn't work. It is always a blend. Blended formula is always the best formula, and the teacher is the best judge to decide when to use what. Okay? So be your own judge. Decide which time to use which method and go for it. कहने का मतलब ये है, don't go for chocolate talk and lecture always. Minimize it as much as possible and use experiential learning, activity-based learning, discussion-board learning, interactive-based learning as much as possible. Trigger the thinking process of your children. Let them take the onus of their learning. Because after that, unless you take the responsibility, you will never learn. You will never learn. So let them take the responsibility. So I get to do a question time. Hopefully that will tell you later on the And you carry loads of information, positive, constructive strategies to implement in your classrooms and have a happy teaching learning. Madam has taken strenuous efforts to share all the knowledge which she has with us all throughout the day. Thank you, ma'am. And let's hope to meet again and again, many more times. Participants from other schools, thank you for visiting us. We would like to host you again and again for all good reasons and have good times, good teaching learning with us. So I would like to thank all my dear teachers of Bharati as well as other teachers who attended the session today. And I would also like to thank Child Education Society.
society under whose aegis we run, and under the guidance of our Honorable Secretary Ma'am, Chairman Sir, without the support of society, this session would not have been possible. I would also like to thank NTPC management for rendering their unwavering and unconditional support for the most classy and required infrastructure to host this session. I would also like to thank Sahodaya Group, Aryavarta Sahodaya, CBSE Patna, and CBSE also on the whole, under the umbrella and the canopy of which we all are here. And as we come to an end, I would like to request Madam to accept a small token of love from Bharati Public School, Navinagar.